Welcome back to my YouTube channel Programming with Pritam. This is again here the continuation of our beginners in-depth guide to HTML. This is the part 4 of our video. जिसमें इस पार्ट 4 में हम लोग जो सीखेंगे होंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहेंगे, जैसे कि हम लोग सीखेंगे कौन से तरह के स्टाइल्स होते हैं जो हम लोग कौन से तरह के फॉन्ट्स रहते हैं, कौन सी तरह के एट्रीब्यूट्स रहते हैं, इस वीडियो का थ्रू हम लोग देखेंगे। सो हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ये बिगिनर इंडियन गाइड टू एचटीएमएल पार्ट 4। इसमें जो रहेगा वो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। सो लेट स्टार्ट। So first of all, we will discuss about the points that we'll be discussing in this video. जो इसमें रहेंगे द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यस द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में रहेंगे एक्सप्लिसिट टैग्स एंड इम्प्लिसिट टैग्स। ओके, जिसमें आप लोग जानेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है और इसके बाद हम जानेंगे एक्सप्लिसिट टैग्स क्या है और इम्प्लिसिट टैग्स क्या है। The second point we'll be discussing will be our pre-formatted tags. Okay, what are those pre-formatted tags and how we can use and what is the necessity, इसका importance क्या है, हम लोग क्यों use करते हैं, and various others, right? And the third one will be like the font element. We'll talk about the font, different type of like attributes के मैं briefly बताता हूँ। faces होता है, size होता है, color रहता है, तो basically इसके बारे में हम लोग जानेंगे। So this is the attributes of the font element or tag. Yes, this is a font element or tag. And base font tag, जो हम लोग जानेंगे base font tag, जो basically most of time not included in both HTML beginner, but this is very much important. अगर हम लोग बेस फॉन्ट टैग को जानेंगे, क्योंकि ये बेस फॉन्ट टैग आगे से HTML4 में अप्लाई किया गया था, अभी HTML5 में ये अननोन है, इट्स नॉट एप्लीकेबल, बट हम लोग देखेंगे क्यों क्यों ऐसे होता है बोल के। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हम लोग देखेंगे इज स्टिल यूजफुल। सो हम लोग अपना वीडियो को कंक्लूड करेंगे डायरेक्टली विद आवर क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं थ्रू पेन एंड पेपर, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमको कोई इसका आंसर्स दे सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूँगा आप लोग का रिप्लाई करने के लिए। So without any delay, so let's start with our text formatting. That is our point number one: text formatting, explicit and implicit text. Right. So text formatting. Okay, हम लोग text formatting. What is text formatting? Right. First of all, we should understand what is text formatting. सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है कि अगर हम लोग एक वेब पेज को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को, जैसे कि अभी स्क्रीन पे के पॉइंटर क्लिक किया था, ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक्सप्लिसिट टेक्स्ट और स्टाइल ये बोल्ड लेटर पे है। तो इस बोल्ड लेटर को हम लोग तो वर्ड पे थ्रू, ये तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली बोल्ड या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सिलेक्शन कर सकते हैं। सो इम्प्लिसिट टेक्स्ट यूज होते हैं, जो एक टेक्स्ट होते हैं जो एचटीएमएल के थ्रू यूज करके हम लोग ये बोल्ड टैग या फिर एनी डिफरेंट टाइप ऑफ टैग, एनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट टैग क्या है। सो एक्सप्लिसिट टैग्स आर also often called physical text. So हम लोग इसको कहलाते हैं physical text. So physical text, since they very specifically tell the web browser how you want to text, how you want the text to physically appear. So physically appear मतलब कि जैसे कि अभी physically हम लोग देख रहे हैं ये appear और explicit text और styles, और ये text formatting जैसे कि आप देख रहे हैं कलर भी डिफरेंट है, सब देख रहे हैं। सो फिजिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अभी के लिए ऑरेंज है, ये बोल्ड लेटर है, स्ट्रॉन्ग लेटर है। सो इसका साइज भी डिफरेंट है, तो इसके लिए हम एक्सप्लिसिट टैग, डिफरेंट टाइप एक्सप्लिसिट टैग यूज करते हैं। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे दी ब्राउजर इज गिवन नो चॉइस इन द मैटर। सो ब्राउजर को इसमें नो चॉइस मिलता है, इसको इसमें चॉइस नहीं है कि वो सिलेक्ट कर पाए अपना खुद से। अगर वो डिफ़ॉल्ट रहे तो वो अपना चूज़ कर सकता है। सो अनदर फीचर of explicit physical tag is that they can generally be used in combination with other tags, right? So other tags का सर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। Okay, let's see. These are the text and these are the meaning of it. Right? This is the bold text. Remember, this is the bold text. This is a container text. Remember that. ये container text, container tag है. It needs to be it need an on tag. ये on tag कहलाता है और ये off tag कहलाता है। मैंने आप लोग को हाँ शायद पार्ट 1 में बताया था कि container और empty tag में डिफरेंशिएट क्या है। तो ये बोल्ड टेक्स्ट लिखे आएगा और ये इटैलिक टेक्स्ट लिखे आएगा। एज यू कैन सी आई, कैपिटल आई और स्मॉल आई, इट डज नॉट मैटर। सो एंड यू इज फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट। सो डायरेक्टली हम लोग अपना ये प्रैक्टिकल अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये एक्सप्लिसिट टेक्स्ट का बारे में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट टेक्स्ट के लिए मैंने एक
HTML कोड रन किया, ओके, HTML कोड रन किया है, दैट इज HTML हेड टाइटल एक्सप्लिसिट एग्जांपल। यहाँ पे आप बॉडी का अंदर देख से दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट, ओके, बोल्ड मैंने आपको बताया था कि ये कंटेनर टेक्स्ट है तो इसको क्लोज करना जरूरी है। सो दिस इज द बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज द इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज द अंडरलाइन टेक्स्ट। सो कॉम्बिनेशन विद अदर टेक्स्ट मैंने आपको भी बताया था कि कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं विद अदर टेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज इन बोल्ड एंड इटैलिक। सो इसको हम लोग प्रीव्यू करते हैं, इसको प्रोग्राम को रन करके। सो देखते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि लेट मी जूम इन बिट मोर, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट लिखा आ रहा है। यू सी दिस इज द बोल्ड, बोल्ड लेटर कोई स्ट्रॉन्ग लेटर मतलब कि बोल्ड को मतलब कि मोटा करके रखा है, आप देख सकते हैं। और इटैलिक को स्लैंटेड फॉर्म, अंडरलाइन को अंडरलाइन रखा है, दिस इज बोल्ड बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्म टेक्स्ट, हम देखिए समझ सकते हैं, राइट। Now let's move on to our what we call is our implicit text, right? So implicit text, okay, what is implicit text? So implicit texts are often also called logical style. So logical style या फिर logical text, right? Since they allowed a browser some freedom in how it will display the text. So ये depend करता है browser के ऊपर, जिसकी मैं अभी currently use कर रहा हूँ Brave browser. You can use Chrome, you can use Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera, different types Safari and many more browser available on the internet. तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेट इतना एप्लीकेबल ना हो तो वो ब्राउज़र अपना ही टेक्स्ट अपना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अपना डिफ़ॉल्ट सॉरी अपना डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। सो एम्फेसिस बेसिकली इटैलिक टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, दैट इज बोल्ड टेक्स्ट एंड टीटी टेली टेक्स्ट। सो दिस इज मोनोस्पेस टेक्स्ट, ओके, दिस इज मोनोस्पेस टेक्स्ट, ओके। नोट, यहाँ पे नोट रखने की बात है, ओके, नोट रखने के बाद यार देयर आर टू डिस्टिंक्शन बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था फिजिकल टेक्स्ट क्या होता है, फिजिकल टेक्स्ट होता है एक्सप्लिसिट टेक्स्ट और लॉजिकल टेक्स्ट होता है कि इम्प्लिसिट टेक्स्ट, राइट। सो इसका टू डिफरेंशिएशन, देयर आर टू डिस्टिंक्शन होता है। द फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज दैट दिस लॉजिकल टेक्स्ट, जो लॉजिकल टेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वो होंगे इम्प्लिसिट टेक्स्ट, दैट इज ई एम स्ट्रॉन्ग एंड टी टी फॉर एग्जाम्पल, ओके, विल ऑलवेज रेंडर बाय एनी वेब ब्राउजर दैट व्यू देम। You see, ये हमेशा रेंडर करेगा बाय एनी वेब ब्राउजर दैट व्यू दैट। इवन टेक्स्ट ब्राउजर अनेबल टू शो इटैलिक टेक्स्ट will display the EM or strong text by underlining or boldfacing or highlighting the text. इसका मतलब है कि अगर वेब ब्राउज़र ये टेक्स्ट को डिस्टिंग्विश ना कर पाए, पर ये उतना भी ये ट्राई करता है कि टेक्स्ट ब्राउज़र इसको डिस्टिंग्विश करे। सो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये सिंपली यूज़ करता है यूजिंग अंडरलाइनिंग या फिर बोल्ड फेसिंग, मतलब कि स्ट्रॉन्ग करके, एंड हाईलाइटिंग, इवन हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, ओके। द सेकंड रहता है कि सेकंड दिस टैग्स आर जनरली नॉट इफेक्टिव व्हेन यूज्ड टुगेदर। आप हम जैसे कि मैंने बताया था इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टेक्स्ट में ये टेक्स्ट यूज कर सकते हैं टुगेदर, मैंने आप लोगों को भी प्रैक्टिकली दिखाया था। पर यहाँ पे इम्प्लिसिट टेक्स्ट में कभी कभी टेक्स्ट रिजल्ट शो करते हैं, जैसे कि बोल्ड आई टेक्स्ट या फिर कभी कभी ई एम स्ट्रॉक टेक्स्ट रिलीफ। ये डिपेंड करता है अपना ब्राउज़र पर। अगर ब्राउज़र ये रेंडर ना कर पाए तो ये अंडरलाइनिंग या बोल्ड फेसिंग या फिर हाईलाइट कर देता है उस टेक्स्ट को जो ये रेंडर ना हुआ। सो हम लोग देखते हैं और इम्प्लिसिट टेक्स्ट, ओके, let's see our implicit text. So this is our implicit text, right? So this is an implicit example, आप देख सकते हैं बॉडी का अंदर। सो आप लोग को ये तो मालूम हो गया होगा, दिस इज बेसिक स्टेबल स्ट्रक्चर, ओके। सो बॉडी का अंदर होगा दिस इज इन एम्फेसिस टेक्स्ट, दैट इज ई एम, दिस इज इन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस एंड दिस इज टेली टाइप, सो टी, राइट। ओके, इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सो ओके, लेट मी जूम इन अगेन। आप देख सकते हैं दिस इज इन एम्फेसिस टेक्स्ट, दिस इज इन एम्फेसिस टेक्स्ट एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस टेक्स्ट, दिस इज डायरेक्ट टेक्स्ट। सो कोड एडिटर वीएस कोड हर तरह के कोड्स को रन करता है, इसलिए बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं। अदरवाइज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेब ब्राउजर्स लाइक ओपेरा। ओपेरा में आप ट्राई करके देखिए, कभी कभी ये टेली टाइप का ऑप्शन नहीं आता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन नहीं आता है, एम्फेसिस का ऑप्शन नहीं आता। आप एक बार डिफरेंट टाइप ऑफ यू कैन यूज ऑनलाइन एडिटर ऑल्सो, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए। सो हम लोग अपना एक्सप्लिसिट टेक्स्ट को देख चुके हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट पॉइंट का आगे हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी आवर फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो हम लोग को फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के भी बारे में जानना है।
फॉर्मेटिंग एलिमेंट, सो व्हाट इज फॉर्मेटिंग एलिमेंट? सो हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं जो टेक्स्ट को स्टाइलिंग करने के लिए, जो होता है बोल्ड, हम लोग सीखा था इटालिक, टेरिटाइप, अंडरलाइन, ये न्यू वाला है, ये इसमें इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट नहीं गिरता है, बेसिकली ये एक स्टाइलिंग है, दैट विल बी स्ट्राइक, देन दिस वन विल बी बिग, ओके, स्मॉल, देन सब स्टैंड फॉर सबस्क्रिप्ट, and SUP will be sub, will be stand for superscript. So directly इसको हम लोग practically देखते हैं. Okay, you can see here, this is the uh, basic tag, okay, basic structure of an HTML. जो मैंने body का अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, this is in bold text, this is in italic text, this is in teletype, this is underlined. So this is not new to us. Okay, this what is new is to us is the strike, big, small, sub and sub. Okay, the sub and subscript. So हम लोग इसको प्रीव्यू करके देखते हैं what will be it. So आप लोग देख सकते हैं, लेट मी जूम इन, मैंने यहाँ पे लिखा था दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट, एज यू कैन सी दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज टेलीटाइप टेक्स्ट, this is underlined, there is as a strike through example, this is big, this is small, this is subscript, this is superscript. आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, it depends on the formatting या आप लोग जिसके मैथमेटिकल इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग जो मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट यूज कर सकते हैं, बिग स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अपना डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग यूज कर सकते. सो वन ऑफ देम इज दिस, एंड विल टॉक अबाउट मोर एडवांस लेवल ऑल्सो इन द फ्यूचर. So stay tuned with that. Okay, now we have understood our pre-formatted text. Now let's see, formatting elements. Now let's see our pre-formatted text. Okay, now we will be talking about our pre-formatted text. Okay, let's understand हम लोग को ये pre-formatted text क्या होता है, हम लोग को अभी समझना चाहिए. So preformatted text क्या है? So the preformatted text, okay, the preformatted text is designed to allow you to keep the exact spacing. Remember, ये important point है. This is the important point. To mark it out. This is the exact spacing and return that you have put between the on and off tag. Okay. जो आप लोग ऑन एंड ऑफ टैग करें, ये एक बेसिकली एक कंटेनर टैग है, बेसिकली ये कंटेनर टैग है. हाँ, रिमेंबर दैट दिस इज अ कंटेनर टैग, दिस इज एम्प्टी टैग. जो इसका अंदर रहेगा वो बेसिकली सेम पर्सपेक्टिव में रहेगा. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जो पोइट्री पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पोइट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, तो जो पोइट्री के लाइन्स होते हैं, जो नेक्स्ट लाइन को कभी हम लोग टैप करके लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे. सो डायरेक्टली मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल की तरफ, फॉर इंटेंस इन मैथमेटिकल फॉर्मूला, और इफ यू क्रिएट ए टेबल, हाँ जी, टेबल में भी क्रिएट हो सकता है. ऑल्सो फॉर लिस्ट, लाइनिंग अप डेसिमल फॉर रूपी फिगर्स एंड इवन पोइट्री. सो दिस आर द एग्जाम्पल्स, यू कैन रिमेंबर दोस. सो नोट, सो हम लोग को एक नोट भी रिमेंबर होना चाहिए सर. दैट इज नोट द प्रीफॉर्मेट टेक्स्ट, प्री टैग इज ए कंटेनर टैग. जैसे कि मैंने बताया था, इट इज ए कंटेनर टैग, दैट इज प्री एंड कंटेंट, इसका क्लोजिंग और इसका ऑन एंड ऑफ टैग होना चाहिए. And the text is monospace font. So monospace font, what is monospace font? Monospace font is just TT. अभी जो हम लोग पढ़े थे लास्ट पॉइंट में, that is TT, that is teletype, right? So you can even use the pre-tag to create lines in document without typing any text between them. Yes, ये br tag का जैसे भी काम करता है, पर ये next line को repeat करता है. So let's see directly to our code editor how this work. Okay, you can see here. Okay, let me cancel this out. Okay, as you can see here, okay, this is the basic HTML structure. यहाँ पे आप बॉडी में देखिए, ये एक नॉर्मल H3 है. दिस इज द हेडर टैग, जिसमें प्रीवियस वीडियोस में हम बताया था कि हेडर टैग, different type of header text. So basically H3 is one of those. So then paragraph tag, then paragraph. जो ये paragraph tag हम लोग जो लिखा हुआ है, ये अगर हम लोग प्रीव्यू करें तो कैसा होगा. सो लेट्स सी प्रीव्यू करने के बाद, so let's see let's preview those. Okay, let's preview them. Okay, one moment, I have made mistake. Okay, okay, let's preview them. Okay, one moment. अगर अभी तो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू, अपना कोड एडिटर के थ्रू, यहाँ पे लिखा है टाइगर टर्नेट बनेगा. दिस इज पोइट्री आई जस्ट टू फ्रॉम द इंटरनेट. ओके, आप लोग देख सकते हैं टाइगर रनिंग ब्राइट.
यहाँ पे आप बियर टैग भी अप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, नो नो स्टाइलिंग, नो नथिंग। सो इसको प्रीव्यू करके देखते हैं। तो प्रीव्यू करने के बाद क्या क्या रहता है, आप देख सकते हैं दिस इज द नॉर्मल टेक्स्ट। इसमें ना ब्रेक लाइन ब्रेक होता है, ये तो डायरेक्टली अपना एक सेंटेंस में कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी डायरेक्टली एक सेंटेंस में ये अपना जो हम कीबोर्ड में एंटर किए उसकी तरह नहीं आते। तो बेसिकली तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट अप्लाई होने से बेसिकली हम लोग जो कीबोर्ड के थ्रू लिखा हुआ है, जैसे कि टाइगर टाइगर बनिंग राइट, इसके अंदर मैंने एक टैब दिया है, ये टैब है। तो बेसिकली ये टैब को भी मेंटेन करता है और आउटपुट में भी शो करता है वो टैब को। सो देखते हैं हाउ दिस वर्क। as you can see मैं पेज को smaller and bigger कर रहा हूँ, पर there is no changes to it, can see। okay, let me zoom in a bit more, you see there is no changes to it। so preformatted text का इम्पोर्टेंस है जो पोइट्री, जो रुपी सिंबल डिसिमल जो लिखता है वो मेंटेन करने के लिए। सो एज यू कैन सी जो हम लोग कोड के थ्रू लिखा था, यू कैन सी जो हम लोग कोड में लिखा था द टाइगर टाइगर बर्निंग है, जिसमें हम लोग टैब भी यूज़ किया था और एंटर स्पेस भी यूज़ किया था, सो एग्जैक्टली इट अपियर टू इट। अगर हम लोग इसको इधर करें तो क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे भी चेंजेस देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी चेंजेस देख पा रहे हैं, यू कैन सी। तो दिस इज सिंपल वन। सो मैंने और एक चीज़ बताया सर, दैट विल बी एडिंग एक्स्ट्रा लाइन्स। सो प्री फॉर्मेट टेक्स्ट टैग यूज़ करते हैं फॉर एडिंग एक्स्ट्रा लाइन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ओके वन मोमेंट, यहाँ पे देख पा रहे हो यार, क्रिएट योर फेयरफुल सिमेट्री एंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का अंदर 21 लाइन का स्पेस है। तो बेसिकली प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट अगर हम लोग इधर अप्लाई करें तो देखो इतना सुंदर से आ रहा है, मतलब कि एकदम नीट एंड क्लीन आ रहा है। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट कैन बी यूज एज दिस ऑल्सो, but I don't recommend this much। You can use the PR tag, you can use CSS। In the future we will talk about this and more and more। so paragraph tag का अंदर अगर हम apply किए, same, this is the same thing right, pre-formatted text, but I have not applied pre-formatted text up here। okay, now you have understood my point। okay, now let's move on to our next part, that will be our the font element right। ओके, द फॉन्ट एलिमेंट में हम लोग अभी बढ़ चुके हैं। तो फॉन्ट एलिमेंट में क्या रहता है, सो फॉन्ट एलिमेंट हम लोग को समझना चाहिए। तो फॉन्ट एलिमेंट क्या है, so the font element, so the method that HTML uses for providing control over the appearance of the text in the font element। तो बेसिकली हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या सीखे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग कुछ सीखे डिफरेंट टाइप ऑफ उसको एक एक्सप्लिसिट स्टाइल, इम्प्लिसिट स्टाइल, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स। अभी हम लोग सीखेंगे उसको और मैनिपुलेट कैसे करें। सो बेसिकली हम लोग एक टैग यूज करते हैं दैट इज फॉन्ट एलिमेंट। द फॉन्ट एलिमेंट इज a container that is open with a font tag, start tag, and close with a closing font end tag, right। तो फॉन्ट टैग बेसिकली कंटेनर टैग है जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली टू चेंजेस द अपीयरेंस। बेसिकली लिखा है बेसिकली चेंजेस द अपीयरेंस। So unless attributes are assigned in the start tag, there is no effect of using font element। अगर हम लोग देखिए कि CSS के थ्रू हम लोग अगर एलिमेंट्स को अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स अगर इस एट्रीब्यूट्स को हम लोग अगर डिफाइन करें, सो अगर हम लोग फॉन्ट एलिमेंट यूज करने से भी ये चेंजेस विल नॉट बी मेड। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन फ्यूचर मोर, बट बेसिकली आप लोग को बस ये तक समझना चाहिए कि अनलेस एट्रीब्यूट्स आर असाइंड in the start direct, there is no effect of using font element। so please do remember this point। so now let's move to our attributes of the font element। so what are those attributes in the font element? so the three attributes that include in the font element, as I've earlier told, that is face, size, and color, right। so face attribute क्या है, the face attribute allow you to specify the font that you would like viewing software। so viewing software जैसे कि web browser, बेसिक वेब ब्राउजर टू यूज व्हेन डिस्प्लेइंग योर डॉक्यूमेंट। सो जो हम लोग डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करते हैं, जो अपना वेब पेज को डिस्प्ले करता है, जो फेस एट्रीब्यूट है, जैसे कि फेस एट्रीब्यूट में डिफरेंट टाइप ऑफ ओके, जैसे कि वर्ड हम लोग जब अगर वर्ड में हम लोग टाइप करते हैं तो बेसिकली देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप देख सकते हैं देयर इज लाइक बाय डिफॉल्ट इट इज कैलिबर बॉडी। आप लोग देख सकते हो उधर में एरियल है, वेटेना है, जॉर्जिया है, टाइम्स न्यू रोमन है। सो बेसिकली ये उसको चेंज करने के लिए रहता है दिस फेस एट्रीब्यूट टैग, राइट। फेस एट्रीब्यूट, सॉरी, फेस एट्रीब्यूट उसका एक पैरामीटर है, द पैरामीटर फॉर दिस एट्रीब्यूट इज द नेम ऑफ द डिजायर फॉन्ट, एग्जांपल वर्डेना। सो रिमेंबर
दिस इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है अगर आप वी को स्मॉल लिखे, कभी कभी आ जाते हैं, पर अगर different there is a collision, okay, कभी कभी नहीं आता, sometimes there is a collision, so I strongly recommend that if you use any font face attribute, use the font name, the desired font name in exactly the manner that you want to display in the web browser. Don't overwrite it, and don't even like mm, make it subscript like I have told you. In small letters, make it exactly as it is written in the original. You can by reference you can check here the word using opening your word, जो word हमें open करके word document open करके उस left side में मैंने जैसे बताया था there are different type of fonts that you can select from, आप उधर से check करके उधर से एक copy करके any one of them copy practice कर सकते हैं. Okay, so and the size, okay, first of all let's practically see this face first. Let's see this practically. Okay, okay, this is the font face. Okay, this is the font face part. Okay, okay, this is the font face attribute example. You can see font face attribute. मैंने आप लोग को attribute क्या बताया था? Attribute first start with attribute name, then equal to sign, or and in quotes the attribute value. So attribute ये है attribute name, and this is the equal to sign. These are quotes and this is the attribute name. सो एट्रीब्यूट नेम में हम लोग क्या रखा, दिस इज वर्डेना, राइट? सो वर्डेना हम लोग रखा. सो इसका मतलब क्या है, दिस एन एग्जांपल ऑफ फॉन्ट सिलेक्शन वेयर फॉन्ट फेस हैज बीन सेट टू वर्डेना. सो लेट्स प्रीव्यू दिस. लेट्स प्रीव्यू दिस. एज यू कैन सी हम लोग जैसा लिखा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉन्ट फेस वेयर फॉन्ट फेस हैज बीन सेट टू वर्डेना. अगर हम लोग इसको एरियल रखें तो क्या होगा, देखते हैं. एरियल, यू कैन सी. अगर हम लोग इसको जॉर्जिया देखते हैं, जॉर्जिया अवेलेबल है या नहीं. जॉर्जिया इज नॉट अवेलेबल. हेल्वेटिका, ओके, हेल्वेटिका इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल. लेट मी फाइंड सम मोर लाइक कैलिबर. हम लोग का कैलिब्री, ओके, बाय डिफॉल्ट इज दिस. ओके, यहाँ पे चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हैं. आई थिंक आई हैव मिस सम स्पेलिंग, दैट्स व्हाई देयर इज सम एरर्स, सो बट यू कैन चेक, राइट? आप लोग देख सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, आप लोग देख सकते हैं. Don't make mistakes like me, some silly mistakes. Okay, never mind, let's do it again. Now you can see here, यहाँ पे आप देखेंगे, this is an example of font selection where font face has been set to Verdana. आप देख सकते हैं, मैंने आप लोग को दिखाया था, font face हम लोग apply किया as Verdana. So and afterward, okay, one more point is that you can see here font face selection can be used as a list of acceptable choice. आप लोग different type of choices रख सकते हैं. अगर जैसे कि different type of web browser does not support Helvetica, does not support Times New Roman. So different type of browser does not support different type of font, right? So particularly हम लोग अगर एक वेबसाइट बनाए, सो बेसिकली वेबसाइट बनाए, सो दिस इज माई मोबाइल फ़ोन, राइट? अगर इस मोबाइल फ़ोन में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजर्स रहेंगे, नॉर्मल ब्राउजर, क्रोम, डिफरेंट टाइप. सो बेसिकली इसमें कभी कभी एरियल ब्लैक कभी दिखाता है, जैसे कि मैंने लिया, कभी कभी दिखाता है फॉन्ट को दिखाता है, कभी कभी नहीं दिखाता. तो सो बेसिकली उसके एम्प्टी ना दिखाने के लिए वी यूजुअली यूज टू राइट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट विद इट. सो बेसिकली डिफरेंट, सो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट रहता है कैलिब्री. सो हम लोग अपने दिखाने के लिए बेसिकली फॉन्ट फेस यूजिंग कॉमा वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स, राइट? सो देखिएगा, font face selection can use a list of acceptable choices. Like I have used here Arial Black, then Verdana, then Calibri. Right, this is an example of font face selection. Okay, अभी फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसका बारे में. So अगर देखिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट सिलेक्शन. आप यहाँ पे दिख पा रहा है कि ये एरियल ब्लैक है. अगर ये एरियल ब्लैक काम ना करे तो ये वर्डेना दिखाएगा. अगर वर्डेना भी काम ना करे तो ये कैलिब्री दिखाएगा. इसका मतलब है ये दिस इज द फॉन्ट फेस. तो फॉन्ट फेस हम लोग एट्रीब्यूट्स को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में भी यूज कर सकते हैं यूजिंग कॉमा एंड आवर डबल कोट्स एंड यूजिंग आवर एट्रीब्यूट नेम or attribute value. Okay, now let's see what is the second attribute that we'll be talking about. The second attribute that we'll be talking about is the size. Okay, the size attribute of the font element allow the document author to specify character height for the text. So basically this is the height. तो इसमें text हम लोग जैसे कि header tag में हम लोग देखा था H1 tag to H6, right?
बेसिकली हम लोग देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ यस दैट इज हेडर जो हेडिंग उसमें हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते टाइप वी कैन नॉट मैनिपुलेट दोस हाइट ऑफ द टेक्स्ट राइट सो हम लोग साइज एट्रीब्यूट यूज करके हम लोग एट्रीब्यूट को यूजिंग दिस एट्रीब्यूट वी कैन मैनिपुलेट दो साइज सो फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट रिलेटिव स्केल जो स्केल रहता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 to 7 so the size attribute can be used in different ways two different ways basically दो तरह के ways होते हैं जो size attribute को हम लोग यूज कर सकते हैं that first is our absolute okay okay first is our absolute and our secondary is our relative so absolute मतलब कि like we will this will like size equal to 5 and secondary will be like size equal to +5 +2 +3 and many more right ओके आप देख सकते हैं बेसिकली हमको स्केलिंग आप लोगों को 1 to 7 ही रखना है सो लेट्स सी डायरेक्टली टू एडिटर okay you can see here okay you can see here font size example this is a font size example you can see font size equal to 1 अभी आप लोग एक क्वेश्चन भी पूछ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स क्यों नहीं दिया so in the first part of my video I have talked about the attribute so इसका एक नोट था कि अगर लेटर से डायरेक्टली स्टार्ट हो अगर नंबर से स्टार्ट हो क्या कोट्स ज़रूरी है क्या कोट्स नहीं ज़रूरी है तो मैं बेसिकली ये डिस्कस कर चुका हूँ आप लोग अगर देखना चाहते हो तो अपना पार्ट 1 वीडियो में आई कार्ड में भी लिंक डाल दूंगा तो आप लोग एक बार देख लीजिए so this is the font size equal to 1 then size 1 then font size 2 these are all absolute okay I have not written it but okay one moment then I will write it myself okay these are absolute okay for your understanding I will write it more clear these are absolute okay uh, these are okay sorry these are absolute okay these are absolute and these are relative okay these are absolute हम लोग absolute का मतलब है कि directly we can apply these sizes and relative का मतलब है कि as we say size equal to +2 this is as you can see so let's preview them you can see यहाँ पे आप size देख सकते हैं size equal to 1 size equal to 2 size equal to 3 size equal to 4 size 5 size 6 size 7 okay size 5 and size 7 are relative remember those okay अगर हम लोग इसको नेगेटिव रखें तो क्या होगा लेट्स सी व्हाट हैपन अगर हम लोग नेगेटिव रखें तो क्या होगा नथिंग यू सी इट इज द डिफॉल्ट क्योंकि हम लोग बोला था स्केलिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 to 7 ओके अगर हम लोग स्केलिंग को अगर हम लोग 8 रखें तो अगर हम लोग 8 रखें तो 8 yes it's working but you can see there's not much a difference right you can check but the scaling does not occur right see size 7 का बाद और ऊपर नहीं जाता है you give how much 100 also there is no changes give 1000 also there is no changes so basically scaling रहता है from 1 to 7 remember this part okay this usually come in like multiple choice questions like what's the font size scaling what's the size of the scaling you can answer like from 1 to 7 and it cannot be in negative numbers okay okay now we have understood this now let's move on to our third attribute that is our color attribute okay the color attribute so the color attribute accept either a hexadecimal RGB value or one of the standard color name so in the part 1 of our video मैंने आप लोग को बताया था hexadecimal values होते हैं और standard color names होते हैं आप लोग any type of use कर सकते हैं so basically let's see okay let's see that is our font color example so I have taken here font color equal to this and hexadecimal value that is for the red okay this text is red closing font okay this is br tag okay then font color then blue so let's see how this will preview okay you can see like this is a text this is text in red this is in blue suppose I want to change this blue suppose मैं इस blue को change करना चाहता हूँ suppose मैं इसको yellow रखता हूँ अगर yellow रखता हूँ you can see this yellow अगर मैं इसको white रखता हूँ it can be visible right white it can't be visible suppose again this is also red you can apply those right
तो बेसिकली आप लोग यूज़ कर सकते हैं यूजिंग कलर्स वैल्यूज और कलर पिकर। मैं आप लोगों को कलर पिकर का भी एग्जांपल दिखाऊंगा इन द फ्यूचर वीडियोस। थ्रू वी एस कोड में हम लोग कलर पिकर को यूज़ करके लाइक डिफरेंट, हम लोग डायरेक्टली ऐसा यूज़ करके डिफरेंट वेरियस कलर्स ऑफ कलर्स हम लोग निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, मिलियंस ऑफ कलर्स दिखा सकते हैं। सो बेसिकली अबाउट दिस। सो attributes of the font element हो चुका। नाउ what appears, ओके द बेस फॉन्ट टैग। तो मैंने पॉइंट्स फॉर डिस्कशन में बेस फॉन्ट टैग का बारे में बात किया था। सो बेस फॉन्ट टैग क्या अभी भी यूजफुल है या फिर इट्स नॉट यूजफुल, लेट्स फाइंड आउट। सो बेस फॉन्ट टैग क्या होता है? So first of all, let's understand what is the base font tag. The base font tag is used to establish the standard font size, face, color for the tags in the document. The choices made in the base font tag remain in place for the rest of the document. Remember, ये rest of the document के लिए maintain होता है base point. So unless they are overwritten by the font element. So I'm not focusing much on the base point because HTML4 supported base point tag. Okay, now in HTML5, currently we are in HTML5 to be exact. Then in HTML5 there is base font tag has been removed. Okay, the base font tag has been removed. So if you can see here the base font tag, you can see. So note when the font element is closed, the base font characteristic are returned. ये देखिए आप देख सकते हैं the font element अगर close करें तो base font characteristic return हो जाते हैं. So base font attribute can be changed by using another base font. Okay, the base point is an empty tag, not a container tag. Remember that. ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं जो HTML4 में, क्योंकि because there are questions, right? There are thousands of questions that the questioner might set, and for confusing you, he or she might ask you like what are those tags that have not been included in HTML5. You can clearly say that the base font tag is one of those. You can clearly explain that why and understanding at different points, right? So in future we will talk also what are those what are those tags that has also been removed from HTML5. So like there is okay now, okay okay, moving to the point. Okay, there is no base font and tag. Okay, so base font uses face size color attribute just as the font element does. So this is very similar to just font tag, but basically it is a empty tag, it is not a container tag. And remember, this is the main point. This is the what we came from. Basement tag cannot be used in HTML5. It was useful till HTML4. So we cannot use and we cannot edit in this. Even now you can try using online editor using HTML4 online editor. You can check how basement work, how basement tag work. You can even share it to me on my Instagram also. You can like even share it on my comment section. Or what is the output that you have received? I'll definitely reach out to you. Okay. Now, okay, we have really come to our end of our video. So, in this video, we are talking about questions and exercises. First of all, before seeing all the question and exercises, what do we learn? हम लोग को क्या सीखा है इस वीडियो से? हम लोग सीखा है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लिसिट टैग, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लिसिट टैग्स, जो प्री फॉर्मेटेड टैग्स रहते हैं, जो फ्रंट एलिमेंट रहते हैं, जो फॉन्ट फेस रहते हैं, फॉन्ट साइज, देन फॉन्ट कलर, and different types of like जो प्री फॉर्मेट टेक्स्ट अगर ब्लैंक स्पेस रखे तो क्या होता है. सो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस. Now see, the question number one that we'll be facing is what are the other names for explicit and implicit text? Okay, these are usually come for competitive exams like MCQs. Okay, like the explicit tag क्या होता है, physical tag नहीं होता है या फिर logical tag. Same goes for implicit text. Okay, what is the difference between an explicit tag and implicit text? अनइम्प्लिसिट टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है और इम्प्लिसिट टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा वापस से उससे. व्हाई इज द बोल्ड टैग कंसीडर एक्सप्लिसिट? बोल्ड टैग को क्यों एक्सप्लिसिट टैग कहा जाता है? बिकॉज इट फोर्स द वेब ब्राउजर टू डायरेक्टली शो, राइट? So will the iTag work in the text-based browser? How about the EM tag? Okay, do answer this question. Okay, what programmer's HTML tag is usually displayed differently from the others? Right. What are common HTML tag is similar to the pre tag? Okay, हम लोग जो बताया था BR tag, pre tag. Okay. Okay, can you use other tags such as bold tag or italic with pre-container tag? Yes, you can use such the in pre-container tag. You can check them if you are really interested. Then you can check them. Okay, try.
manipulating these codes, and try everything that you can, because by practicing only we can keep moving forward, right? So now we have seen the questions. Now we are moving forward to our exercises. So this will be our 3 exercises that I'll be concluding up in this video. So फर्स्ट एक्सरसाइज होगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिएगा that uses all different implicit and explicit layout text. Discuss and note how your browser random them. Also note what happened when you combine text and view them in your browser. And create a document that the second exercise that will be create a document that uses multiple BR paragraph and returns pre-attack to add blank line to your document. Then test the page in your web browser to see which are most reliable. The second exercise is a little bit tough. I have given you. I'll not be providing any hint up here. If you have any doubt, you can directly contact me in my Instagram or in the comment section. Okay. And then the third exercise is like create a document using the pre-tag to work as an invoice or bill of sale, complete with aligned rupee values and a total. Okay, remember not to use the tab key and avoid using emphasis tags like bold or emphasis within that. So basically, हम लोग question and exercise have completed. So basically, we have come to the end of this video. So thank you for tuning up in this video. मैं शुक्रिया कहता हूँ आप लोग को for continuing this journey, and I hope you will be continuing this journey with me along, and we'll be completing this beginner in-depth guide to HTML. So our next topic that we'll be including on our part 5 will be our adding graphic to our web pages. So without any delay, not making this video much longer, have a nice day and see you tomorrow. Bye bye.